हेलो गाइस, वी आर बैक। तो बस कम्युनिटी मीटिंग स्टार्ट हो ही गई है। लगाता हूँ, बस अभी लगाता हूँ, 2 मिनट वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए। बस स्टार्ट हुई है, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कम्युनिटी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस, आ जाए, आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए। ज्वाइन करते हैं फटाफट। ऐसे ट्वेल्व। Um, सारे जने गाइस, सारे जने हैं। 2 more minutes and we start, guys. 2 मिनट में स्टार्ट हो रही है गाइस। अच्छा, स्टार्ट नहीं हुई, टाइम पे आए अपन। आए 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 आए, फटाफट से आए। अब पॉसिबल नहीं होगा कैम लगाना, टाइम हो जाएगा जितने, तो आज ऐसे ही स्ट्रीम करेंगे। ओके, आओ जल्दी जल्दी आओ। Is it तब तक can we open PTS so people can put questions जब तक we complete our मैंने part. चैट में ऑलरेडी पूछ रहे हैं लोग, नो वरीज। हाँ, I know, I know. Okay. Okay. PTS is open. शैम्पू नीचे से सबको टैग कर ले। साहिब कैडबरी, स्नैपी, कार्तिक फ्लैश। PS, P से परमिशन, T से टू, S से स्पीक, परमिशन टू स्पीक आए, ये भी सही है। एडमिन पैरेंट, अरमान वॉकर। फ्रेंड्स, किसके कल कितने बजे लाइट बैच शुरू कर देते हैं। स्टार्ट होगा सर्वर? Okay. Yeah, guys, everyone's here. So welcome again, guys, for the second half of the first community meeting of Soulcity. मिस हो गया था उस दिन with the essence of time हम लोग queries नहीं ले पाए आप लोगों के and we wanted to really hear any questions that you guys have and answer them. कि वैसे we are trying to keep up. A lot of people have questions और वो लोग tickets खोल रहे हैं, हम लोग constantly कोशिश कर रहे हैं कि हम priority पे answer करते रहें, but there were few things that we definitely wanted to mention जो मैंने agenda में भी किया था. So आई थिंक उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं. वी आर ऑलरेडी रीडिंग क्वेश्चंस, तो हम लोग एक एक करके आंसर करेंगे एंड अगर किसी पे विल सी इफ समवन वांट्स टू कम एंड एक्सप्लेन देयर क्वेश्चन, वो भी. बट we'll start with the few points that we had in the in our announcement section, in the whitelisted announcement. थॉमसन, So basically, I think the first and foremost and very important thing is about how will you connect into the server, right?
So everything is in a single line हम लोग के वेबसाइट के थ्रू ही जाता है. All connections in the game are through the website only. So soulcity.gg is your friend. Whenever the server is up, when you guys see the announcement, go to soulcity.gg, open your dashboard. There'll be a connect button that you guys see there. वहाँ पे आप connect press करोगे, you will be able to get to the server. It'll automatically ask you in a pop-up to launch 5M, और जैसे ही आप उसको अलाउ करोगे, it will automatically start connecting into the server. That is your only way to connect. With that said, अगर अभी कभी आप disconnect हो जाते हो for any reason, you crash, you basically just have to go to the website again. I mean, it doesn't expire, so you can keep it open in the background, or it'll be able to get you through. For some reasons, I feel, matlab, for some infra security wise reason, not some reasons, यूसेज ऑफ आई थिंक कोई भी एग्जिट लैग टाइप का एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी कनेक्ट करने में. You should be able to connect normally without any use of that application. Still, अगर किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं नेटवर्किंग रिलेटेड तो वो ओपन कर सकते हैं एक टिकट एंड वील उनका जो एग्जैक्ट उनका आईपी है विल रन इट बाय आवर होस्ट एंड विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर देम. ठीक है, तो दैट इज आल्सो वन थिंग. अभी आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज, वी जस्ट लॉन्च्ड आवर स्टोर एंड आई सॉ कि अ लॉट ऑफ यू हैव already got priorities for your day one. दो queries थी that I really want to clear. First is all priorities will जो उसका validity है starts from the day server kicks off. So the second server starts, आपका time उस दिन से count होना शुरू होगा. First and second is अभी बहुत लोगों को अपने डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा होगा, उनका प्रायोरिटीज अभी भी नन दिख रहा होगा. So do not worry. The team is working to make sure कि before launch आप सबका priorities वहाँ update हो गया होगा. So do not worry about that factor at all. Okay. Rishit, fill me in if I'm in case मैं कुछ भी miss करूँ. Before moving ahead, very sorry everyone, and this is no joke, no prank. Server एक दिन और बस delay होने जा रहा है. It's gonna be on 2nd instead of 1st. The major reason behind the delay will be it's हमारे जो partners है server में, Anna Velocity Gaming VLT, as you must all know. He and his entire staff is busy. All the creators are busy tomorrow as उनका कल semi-finals है and वो लोग available नहीं होंगे, तो it's not fair to launch the server without them. And second को Lex भी आ जाएगा, so we have a win-win situation in all terms. So very sorry for again a day delay, but nothing can stop it from launching on 2nd. We know it's been tough, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बट एक दिन की बात है. आप लोग भी मैचेस देखो कल, वीएलटी को सपोर्ट करो एंड Yeah, guys, परसों we से need लेट्स to. गेट गोइंग. या But I think, I mean, just to keep you guys company, because we all will be watching the match. So, if you guys would want, हम लोग will create a VC. We'll sit Yeah. here and watch the match together. ठीक है? So, ऐसे dishearten मत हो. कल we'll do something. It's important to support the team, guys. So, yeah. I think हम लोग भी miss out करेंगे अगर हम लोग कल खेल रहे होंगे, right? So, yeah. Don't worry. हम लोग So will keep you guys company. and regarding second, we'll make it live at 7 p.m. or 8 p.m. Probably 8 p.m. Yeah, So most we'll probably. decide, but yeah. So 7 या 8 बजे second को it will go live. It's just about one day, and I think you guys are smart and patient enough कि एक दिन और wait कर लो चाहे इतना रुके. Yeah. But let's move ahead with the Q&A. Sorry. Okay.
Okay, so I'll take it further from there. Um, okay, so connections ke related I've told. Second, very important thing is guys, creating realistic character names. Um, when I say realistic character names, आप लोग जानते हो, जब भी आप कोई नाम रख रहे हो, आप एक बार just give it a very hard thought about कि क्या ये कैरेक्टर IRL एग्जिस्ट कर सकता है इस नेम के साथ। अगर कर सकता है मतलब यू आर टेकिंग द राइट कॉल। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैंने नहीं सुना है या प्रॉब्लम मैं कभी सुन भी नहीं पाऊंगा, देन यू आर डेफिनेटली यू हैव टू रिजेक्ट दैट नेम योरसेल्फ। ठीक है, इट्स अ वाइट लिस्टेड एनवायरनमेंट गाइस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज के लिए आपको मॉडरेशन की जरूरत पड़े। आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू गाइस हैव टू स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ। ठीक है, do's and don'ts in initial phase, I think try to start following your RP. Everyone is arriving new in the city. ठीक है, यू कैन प्लान आउट योर स्टोरी। आप अपनी स्टोरी उस हिसाब से प्लान करो कि आप न्यू आए हो, पर्पस क्या है, आई मीन दोज थिंग्स। आई डोंट वांट टू स्पून फीड अ लॉट, even for I would say the emergency services. Server on day one will just start as a place where they arrive, they would go, they would request their job, everything will fall into place. तो डे वन है, एक्सप्लोर कीजिए। डे वन ऐसा नहीं है कि इफ यू आर अ कॉप, इफ यू आर अ डॉक्टर, मीन जस्ट इल जस्ट बी वर्क फॉर यू। सर्वर में वी हैव मेड श्योर दैट देयर आर थिंग्स कि अगर वो लोग डे वन अगर वो भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, दे आर एक्सप्लोरिंग फॉर देमसेल्व्स, it will still be there'll still be a lot of things to do, and everything would be functional for them as well. वो कहीं पे उनकी RP restrict नहीं होगी for day one. I'm pretty sure it's gonna be like more interaction for sure. तो उस चीज पे फोकस करें। एंड very I think if it's not here already, for all the people who are whitelisted, यहाँ पर एक bugs and issue. Okay, so let me I can screen share here as well, right? It will be public by tomorrow. तो फिर भी जस्ट टू गिव यू गाइज अ लिटिल आइडिया इज ऐसा एक चैनल आप लोगों को दिखेगा स्टार्टिंग टुमारो, एंड दिस इज बेसिकली इफ इन केस यू फाइंड अ बग, आप लोग हम लोगों को अगर हेल्प करते हो, इट विल बी द डेवलपमेंट प्रोसेस वुड बी मच स्मूदर. Any bug that you find, just come here, create a new post, put क्या bug है. If you have a video, अगर आप shadow play use करते हो, amazing, put a video here. Or just put the steps to reproduce कि वो bug तक आप कैसे पहुंचे. How do you think कि that bug can, गाइस बहुत अच्छा would समझा रहे, happen again बहुत अच्छा for समझा रहे, someone else. बहुत So अच्छा। this is important to have a much faster. लिटरली गाइस बहुत अच्छा समझा रहा है, ये बहुत सही समझा रहे लाइट भाई। लाइट भाई, जॉर्ड, गोल्डी भाई, जॉर्ड, मतलब सब सब जने अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छे से केयर करते हैं लोगों की, जो मैंने मतलब अब तक देखा है। नाइस। Pretty sure कि if you guys keep educating us, we will be able to clear more bugs more quickly. Okay, so that is one for sure request that I have. So ये अभी सेटअप हो रहा है, like this is still being set up. We are setting some tags and things जिससे particularly आप लोग राउट कर पाओ कि कोई बग अगर आपको मिला है तो वो किस डायरेक्शन का है, नेटवर्किंग रिलेटेड है या फिर कुछ और है. सो विल मेक श्योर कि वो सब चीजें हों, तो कल के बाद से you guys will have access to that, or anyways whenever you guys in the server, then only uska usage will make sense, right? So now I think guys if I missed anything, nahi to we can just move to Q&A. I guess you haven't. I mean, बीच में कुछ PTS के याद हो तो then we can, obviously continue. Okay, so we can start. Okay, so first wala ka to I think we have answered. Manviji, thank you for asking, but I think that question has been answered.
Okay. Server 5M पे होगा, Ronan. Yeah, so that's going to be in 5M, but I think people already answered. Okay, so moving on. Steam required to be running in the background for sure. Emans, I think without Steam running in the background, आप नहीं खेल पाओगे. Steam is where we use it as an identifier to identify कि who's playing. तो वो बहुत important है. So please make sure कि you have Steam running in the background. Then let's read Heavers. So first, for EMSRP, person comes with bullet inside his body and says, "Jaldi treat karo." Is it not possible? So please understand if EMSRP takes time. ये मैंने लास्ट में कवर किया था. I think you guys need to show some you know, थोड़ा तुम लोग को रिस्पेक्ट शो करना है टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ आरपीस जो कि आप लोगों के लिए है सर्वर में. दीज आर मोर हेल्पफुल टू यू. दो वी हैव मेड कि देयर आर लॉट ऑफ मैकेनिक्स व्हिच विल रिस्ट्रिक्ट यू टू डू जल्दी ट्रीट करो नाउ, बट आई फील कि हम लोगों को नहीं लगाने की जरूरत पड़नी चाहिए थी वो चीजें. आई थिंक यू गाइस शुड हैव बीन एबल टू डू इट yourself. So I think starting on the right foot, मैं कहना चाहूंगा कि आई थिंक इस बार आप लोग समझोगे इसको. So that is important. Possible ban the word RR in RP. Saying हमेशा RR करता है about a certain someone creates wrong impression for that person. RR. So पहले तो I think there is. So the problem with this sentence is like, so it's the character and the IRL self should be very separate. So even though कहते हैं, I think if it's being said there could be same lines जो दो तरीके से बोली जा सकते हैं. अगर in a distasteful manner someone is saying those lines and those words for someone, I condemn it personally. I think that is not right. That should not happen. But if it's directly to the character, I mean, I think people do have, should have that privilege to attack each other's character in RP. I mean, that's for sure. Especially when you are doing gang RP, मैंने ये चीज नोटिस करी है. गैंग आरपी में एक बहुत बड़ा पर्दा लोग लगा लेते हैं इस चीज का कि हम तो गैंग है, कुछ भी बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं, चाहे पीडी हो चाहे सिविलियन हो. सो आप थोड़ा सा कंसिडरेट होइए. एंड आप खाली आरपी तक के लिए गैंग है, रियल लाइफ गैंगस्टर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है. यहाँ पे सब आरपी करने आए हैं. तो थोड़ा सा उस चीज को लेके द पॉइंट सेड आरआर एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टर्म्स गिवन टू फ्यू पीपल, एंड उनको जब भी मिलना एंड डेलिबरेटली इस तरह की बातें करना, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट. अगर किसी सामने वाले इंडिविजुअल को गाइस अभी मैं थोड़ा बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को इनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है. इनके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है मेरा, और आप भी इनकी बात सुनोगे तो आपको भी सीखने को मिलेगा. तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होगा. तो अभी चलते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, फिर लास्ट में आपसे बात करूँगा. ठीक है? हम लोग जैसा कि आई थिंक कल मैं और गोल्डी भाई की स्ट्रीम पे हम लोग बात कर रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स प्लान्ड. और अपना आप लोग इमेजिनेशन रिस्ट्रिक्ट करके क्रिम मत करने. जस्ट बिकॉज इफ यू वांट टू डू सिविल एंड आरपी एंड आप क्रिम इसलिए करने लग गए बिकॉज यू थिंक कि देयर आर नॉट इनफ थिंग्स टू डू, ऐसे मत. ऐसा ये थॉट प्रोसेस बंद करना पड़ेगा कभी ना कभी. आई थिंक द वे यू गाइज नीड टू थिंक इज देयर इज एन आइडिया विच यू गाइज थिंक ऑल्सो इज फीजिबल, जो हो सकता है वो आप लेके आओ एंड विल डू दैट. एंड बट फॉर दैट यू नीड टू शो प्रोग्रेशन ऑल्सो. ठीक है? सिर्फ आइडिया ही जरूरी नहीं है, यू नीड टू शो प्रोग्रेशन आफ्टर इट. ठीक है? तो अगर आप करोगे तो इट विल बी अमेजिंग.
and we have a lot of things planned. I'm pretty sure कि you guys will love it. तो for sure, you know, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक एस्पेक्ट है. विल मेक श्योर कि देल बी मैकेनिक्स जो डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे फॉर इवन गैंग्स टू रिलाई ऑन सिविलियंस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन फ्यूचर, जिससे कि देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस. ठीक है, तो काफी सारी चीजें जैसे हम लोग बोलते आ रहे हैं कि विथ वीएलटी रोल प्ले इट वाज एजुकेशनल फॉर अस, तो हम लोगों ने काफी लर्न किया है. दैट वाज लर्निंग फॉर अस, and a lot of things we've already implemented and we'll keep doing that. Okay, so we keep going back and forth. Okay, so moving on to the next one. Is the server low end PC friendly? If it isn't, can we apply FPS mod? As Godibhai said, it is very optimized right now, जैसा कि मेरे को लगता है for sure. एंड आई डोंट थिंक कि आपको कोई FPS मॉड लगाने की जरूरत पड़ेगी एरिस. Try playing the server. It should feel very optimized. Else open a ticket. Let us know क्या problem हो रहा है. We'll see कि if it's entirely कुछ एक script is becoming a reason for people having a hard time or an MLO or anything. We definitely want to know that feedback. But अभी जैसा कि हम लोगों का feedback है, in I think usually we will be 10 to 15 people while doing aggressive testing. तो उस टाइम पे we have had really good results. तो अभी तो मेरे को वो challenge नहीं दिखता है. What is number of slots we want to start somewhere slow and then grow. So 120 100 के बीच में कोई we'll pick a number. It's not that कि हम लोग चाहते नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहले दिन enjoy ना कर पाए. The only reason of we doing this is कि that will be the stress test for the server, and we want to make sure कि जितने भी खेलें they get the best experience rather than we push it to a limit जहाँ पे so धीरे धीरे slowly and gradually I think we take baby steps on server slots. What time server launches? I think between 7 and 8 guys. Till when will all the PD responses come? So Flash. By tomorrow evening, around 5 o'clock, everything will be up for PD responses. Thank you. Okay. Any idea server slots कितने होंगे? Reconnect trio कितने time का मिलेगा? Cadbury, can you tell me how much is the reconnect trio time? Reconnect time will be for 5 minutes. For 5 minutes, guys. So 5 minutes, we also felt ki would be more than enough for anyone who has crashed for genuine reasons would be able to reconnect into the server. If we didn't took any prior pass, then how long does it take to connect? I mean, RV gaming, this is a really difficult question for me to answer. I think there's no right answer to this question. Okay, so we'll know. We'll know apparently after few days of server running, you would know ki what times are easier. Like, I mean, what things I think are more analytics rather. उसका कोई आंसर नहीं है. ठीक है, so OGX, can we pick a name inspired from anime? Yes, you can. मैं वही कह रहा हूँ, जब भी आपको कोई नेम पिक करना है, just think of it in a way कि can this be a name of a character IRL या फिर fiction? In fiction आपको बस ये सोचना है, जैसे in anime I see a lot of I also follow a lot of anime, तो कभी alias होते हैं. Aliases cannot be name. Alias can be something जो आप लोगों को बताओगे जब वो आपसे पूछेंगे, बट आपका जो आईडी कार्ड होता है, द लीगल डॉक्यूमेंट दैट यू हैव शुड हैव अ प्रॉपर नेम. ठीक है, सो अगर मेरा नाम लेट्स से मैं चाहता हूँ सबको कि वो मेरे को आई मीन
anything. If I say कि Mr. X बुलाए मेरे को, so for them to call me Mr. X, it cannot be my name. Let's say my name would be Light, anything, or Han, Louis, whatever जो मेरे कैरेक्टर का नाम होगा. जब मेरे से पूछेंगे नाम क्या है, I can tell them कि ये नाम है मेरा, which is Mr. X. So that is on me, but my document needs to show the real name. So ये हो गया. Can we keep a different in-game name other than the backstory given during the whitelist form? हाँ मतलब अगर if you have follow the same backstory, but अगर name is becoming an issue जो अगर realistic नहीं था. वैसे हमने अभी तक शायद we have given people windows. काफी सारे लोग होंगे आप लोगों में से जिनके हमने टिकट ओपन करके उनको बोला है कि आपका नाम रियलिस्टिक नहीं था, but we liked the backstory, so we whitelisted you. I am saying, I'm telling you guys again कि we have been super lenient on that, but going forward हम लोग नहीं रहेंगे. So since अब हम लोग multiple times बता चुके हैं कि थोड़ा सा realistic name रखना है, so moving forward जो whitelist applications होंगे उसमें we'll be rejecting on basis of those kind of names. So अभी थोड़ा सा ध्यान रखना. But for now I think you can change, but do not change your backstory, at least until if you want to inform the team. Please take care of unrealistic jumps and stunts, and people should have fear of death. This will improve more realistic way of doing. This is a player driven rule. मतलब इसमें जितना हम मैकेनिक साइड से टेक केयर कर सकते थे घोस्ट ओपी, आई थिंक हमने कर लिया है. जो चीज़ें इसमें हम नहीं कर सकते हैं वो है कि जब इफ़ आई पॉइंट अ गन एट यू, वो फेयर जो है वो आपको अपने माइक के थ्रू ही शो करना है. तो दैट इज़ एंटायरली ऑन द रोल प्लेयर, एंड वील कीप अ वेरी क्लोज आई फॉर पीपल टू मेक श्योर कि वो फॉलो करें, बिकॉज विदाउट दैट देयर विल नॉट बी immersion. Will there be entry without? There for sure will be. I mean, it's not required. It's just something which gives you priority, matlab, in the number of slots. Emote by guys, I know that आप लोगों ने बहुतों ने 5M से emote binds करके रखे हुए हैं. So sadly the team is still working on restricting you guys to do that. But मेरा request है, because since everyone is here, I would highly recommend you guys to stop doing it. Just stop using the emote binds for gaining advantage. Emotes is for emotes आप लोगों के रोल प्ले एक्सपीरियंस को इनहांस करने के लिए हैं. emotes आपके emotes are not there for making you have a upper hand in situations. ठीक है, so do not misuse emotes, and वो binds अगर हैं तो वो निकाल देना प्लीज़. कैफे कौन सा है? आई मीन दिस इज समथिंग आपको आरपी में जाके एक्सप्लोर करना है. दिस इज नॉट, आई थिंक ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, गोइंग बैक टू माई प्रीवियस पॉइंट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर इफ़ यू गाइज हैव योर स्टोरी इज दैट यू आर अ बेकर, तो तुमको ये सोचना है कि यू विल बी अ बेकर ओनली. और अगर इफ़ यू वांट टू ओपन अ कॉफ़ी शॉप, इट विल बी अ कॉफ़ी शॉप ओनली. डू नॉट थिंक कि सर्वर में अगर मैं आज बर्गर शॉट डाल देता हूँ तो यू विल बिकम पर्सन who makes really amazing burgers. नहीं, your backstory should stick to what you have written. वही रहनी चाहिए. और मूविंग फॉरवर्ड हम लोग जो एसेट अवेलेबल होंगे उसके वो करवाएंगे. डू नॉट थिंक द अदर वे. ठीक है, देयर इज आई थिंक इस पर यू गाइज नीड टू थिंक डिफरेंटली. ठीक है, प्लीज चेंज VC रीजन टू इंडिया. ओके, नाइस PDS, बट कैन यू चेक रिजित क्या है VC रीजन? Currently it's Singapore. सिंगापुर क्या is like, can you guys put an off topic chat if a lot of you are having problems with it?
Yes, since most of people are okay, so we'll keep it this way. ठीक है, so where are I? So ये हो गया है. I got disconnected and we will get disconnect priority, yes. 5 minutes reconnect prior. What about LSPD interviews? When are they gonna help? Ratio, this is what your character needs to do, right? So you have, just for your scenario, let's say you already know that you have I mean a interview letter from a department, and your character, let's say, arrives in a new city. So just be creative and think what he should do. Okay? And you will know, you will get answers to this. Okay. Slots already covered. Slots. A lot of people have slots question. Okay. So I think काफी सारे questions जब हम answer कर रहे थे, you guys had repetitive questions. So okay, are crosshairs banned? Server will have its own crosshair. External crosshairs are banned. ठीक है? I hope I'm clear on this कि server में already एक crosshair होगा. So okay. So I'm saying that external crosshairs will be banned. So फिर से LSPD के forms open होंगे? Definitely होंगे. This is the first batch. So yeah, for sure they will open. Rashid, do you wanna take few, or Rishit or Flash? Anyone? Are we on the I'll- Kalash ka point, right? Yeah. I'll just be back 1 second. So Kalash ka point is basically परमा के बारे में. So परमा is never forced. Mutually जब decide होता है तभी होता है. तो if there's any RP scenario ongoing और ऐसा कुछ lead हो रहा है जिसमें there's an encounter या फिर कुछ ऐसा scenario जिसमें you can do a perma, you want to do a perma for your character, तब then you can tell the other guy कि हाँ I want to take this way. So ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी तभी पर्मा होता है, नहीं तो पर्मा कैरेक्टर कभी मतलब फोर्स नहीं करते हैं पर्मा करने को. सो आई होप कलाश दैट इज गुड. हाउ अबाउट अ लिमिट टू डू जॉब सो दैट ग्राइंडर्स कम हो जाए लो. सो एवरी जॉब माइट हैव अ कूल डाउन और वो सब तो मैकेनिज्म से सेट करा हुआ है. सो ये चीज़ आपको सर्वर में जाके ऑनेस्टली फाइंड करनी पड़ेगी कि हाउ वी आर गोना प्रिवेंट द इकोनॉमी एज वेल, एंड हाउ सर्वर आगे कैसे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगा सो दैट इट वोंट लाइक फ्लड विद ग्राइंडर्स एज वेल. और देयर इज मोर वेरी कूल स्टफ आगे. सो ये चीज़ उसमें फिगर आउट हो जाएगी. बट स्टिल सजेशंस आर स्टिल अप. सो जैसे जैसे आप लोग खेलते जाओगे तो उसमें हमें भी सजेशंस देते जाना, बग्स एंड इश्यूज रिपोर्ट करते जाना, तो दैट विल हेल्प अ लॉट. Okay. So yeah, I'm back. Thank you. So I think did you answer this? क्या Soulcity में Yeah. quant V use कर सकते हैं? I think you guys can't. Quant V doesn't work. We'll be on pure mode level 1, guys. So I think जिन लोगों के मन में क्वेश्चन है उसका आंसर इससे हो जाएगा. NV works fine. Quant V probably won't. तो कुछ mods हैं जो नहीं work करते, but this is for you guys only because this eventually adds some security. So yeah. Okay, nice question, Flash. चला सकते हैं चॉपर रोड पे, बट वो चलाते चलाते वो रास्ता जो है वो सोल सिटी से बाहर जाता है, वो वाली जो रोड है.
That's what I wanted to address over by that question. Thank you, Light. Okay, so the HUD will have thank you to Mozart. The HUD has a altitude meter, so थोड़ा रोड पे नहीं चलाने का. Okay. अगर yeah. तो also about resolution लो कर सकते हैं. हाँ, resolution you can lower resolution, but aspect ratio you cannot change. ठीक है. Aspect ratio is a thing we want कि वो standard ही रहे. Stretch resolution. We really don't want the game to become we want it to be more chill environment. हम लोग ने बहुत सारे ऐसे mechanics हैं जिससे कि it will be more realistic in nature. तो वो चीज़ें उसको force करती हैं. So it's an experiment for us too. We'll see, but I think it should be good. मतलब it should be something new. Yeah. Okay. Okay, अगर सारे devs okay. Guys, I saw a lot of our devs, they got interviews with cops. So can we start our character progression from day one, like not completely jumping into progression but step by step? You definitely should, because see the way we are setting you up in the server, Afi, कुछ इस तरह से it's picturized that you are arriving into a new city, and that's why if you guys have not अभी तक hint pick नहीं किया आप लोगों ने, तो in our graphics हम लोग we show boarding passes, tickets, airport lobbies, काफी सारे वो जो elements हैं, they're not just for cosmetic or वो we wanted you guys to pick from there कि you guys are just arriving to a new city. Pretty much no one there would be claiming कि मैं बहुत पहले से हूँ यहाँ पर. Everyone would be that we know a little bit. Try to explore as much as of you can. ठीक है. So which graphic modes are allowed? ऐसा प्योर मोड 1 के अंडर अगर आपका कोई भी ग्राफिक मोड चलता है, इट्स अलाउड. जैसा मेरे को पता है शायद क्वांट वी डजंट वर्क, बट एनवी वर्क्स फाइन. एएफके के क्या सर्वर में यस होना चाहिए. सो व्हाट अबाउट कॉप प्रायो? फॉर कॉप मेन कैन वी नो लाइक कब से होगा, सो दैट वी कैन टेक नॉर्मल फ्राइडे. ओके, सो टू एड्रेस कॉप प्रायोस, there will be department priors for everything जहाँ पे department related role play involved है, which is either cop or EMS or DOJ. I mean, I think we'll try to cover a decent enough amount of number. Your cop prio only applies to let's say you're a cop and the server has provided you a cop prio. वो सिर्फ आपके cop character पे ही apply होगा. मतलब the moment you select to connect with, और अगर आप ऑप्ट करते हो कि आप कॉप प्रायो के थ्रू सर्वर के अंदर कनेक्ट कर रहे हो, तो जो आपके कैरेक्टर सिलेक्शन स्क्रीन होएगा वहाँ पे यू विल ओनली बी एबल टू सेलेक्ट योर कॉप कैरेक्टर और EMS कैरेक्टर, और कोई भी डिपार्टमेंट रिलेटेड कैरेक्टर ही आप सेलेक्ट कर पाओगे वहाँ पे. तो वो आपका स्टार्ट होगा. So there is a NRP thing planned for all the cops when they will get their roles. Immediately जैसे ही आप लोगों को roles मिलते हैं आपके, you guys will have the department prio. वो बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में हो जाएगा. आप लोग लियो जनरल ओसी में डिस्कस कर लेना. फ्लैश में भी इफ़ यू वांट्स टू टॉक अबाउट इट हियर और लेटर ही कैन डू इट. He knows more, and Flash, I think, or Rankit can tell you guys more. But the moment you guys will have roles in the server and cop mains, उन लोगों को cop prio के लिए we'll start adding those priors. We're talking about priors, right? Cop priors.
I just want to add one more thing, guys. Your contribution inside the server also, as a cop, also matters in priorities. So keep that in mind if you're a cop main. Yeah. Just wanted to clear that. Not cop, I think I'll speak for all the departments. So Rishit hai here from DOJ, and then I think we don't have Tajinder or Sky, but Shampoo is here. So for EMS, for DOJ, for every place, it's obviously जो cop prio, we expect you to make your good use of that prio that the server is providing. तो आप आए and you give your contribution. So we'll make sure कि हम लोग उस पे we'll monitor it very closely. Okay, so there should be a time frame also for criminals and robbers for their situations. Other than singing songs for robbers, the hostages are not getting any role play. Sometimes they just tell hostages to stand at the take more than 2-3 hours of their unplanned robbery. Okay, I understand कि I know it's very important. Some scenarios get a little heated up. Though I see a lot of times people having fun with hostages as well. Character पे depend करता है. If someone's character is a little humorous, funny, and they're still criminals, वो कर रहे हैं आपके साथ, I think justifies. I cannot enforce on this, but हाँ, be mindful guys. थोड़ा सा all our players and ये environment जो है वो this whole environment लाइट भाई कोई अगर हॉस्टेज बनाया तो हॉस्टेज को वहां पे एंटरटेनमेंट तो कराएगा नहीं यार लाइट बिल्कुल भाई वही मैं कह रहा हूँ so that is जिसमें thinking we cannot enforce this, we cannot definitely हाँ enforce this. आप be mindful. अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने पास्ट सिचुएशंस में देखा, अभी मैकेनिक्स कैसे होंगे that you guys don't know, so मैं कोई assumption अभी तुम लोग को नहीं देना चाहता, but what I think is कि let's say आप किसी को हॉस्टेज बनाते हो, आप किसी पोजीशन पॉइंट तक पहुंचते हो जहां आपको कोई भी हाइस्ट इनिशिएट करना है, और आप देखते हो कि अभी कोई हाइस्ट चल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको लेके घूम रहे होगे, राइट? यू हैव टू बी माइंडफुल फॉर दैट पर्सन्स टाइम एंड यू हैव टू रिलीज हिम. सो थिंग्स लाइक दैट, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये खुद ही हो जाना चाहिए, राइट? तो दैट्स इम्पॉर्टेंट. डीओजे रिस्पॉन्सेस कब तक ऋषित? Responses will be out before the launch. Anyways, वॉक इन इंटरव्यूज होंगे तो आप सर्वर के अंदर जाके फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा जब भी लॉन्च होता है. तो या ऑल्सो वन मोर थिंग, आई सी पीपल passing comments in the PTS channel. Please maintain the decorum. There is off topic chat, you can continue over there. Okay. So how are we going to counter the aggression of gangs towards civilian, because every gang member क्या कर लेगा and then have resources, everything to suppress. ठीक है. So Ferdin, I think if you already heard me say what I said was कि कोई एक dependency हम लोग create करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक वो gangs appear होंगी आपको दिख जाएगा. और आए सेम जी चैट में आए, आ जाए आए चैट में आए. or some stuff to get from civilians in order to progress. वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम सेम जी, वेलकम. I think gangs अगर smart होंगी तो they will understand कि उनको सारे civilians से अपना relation कैसा रखना है, ठीक है? So with that being said, I think that should probably answer your question. I think जो आप पूछने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी बैक स्टोरी पीडी से रिलेटेड नहीं है वो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी, तो क्या हर कोई फिल कर सकता है? और फिर आई थिंक मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, तो अगर आप चाहो तो यू कैन मे बी थोड़ा सा इसको डिटेल में डाल सकते हो, बिकॉज अगर बैक स्टोरी उनकी पीढ़ी की नहीं है और वो फिल कर रहे हैं तो हो सकता है कि क्या वो दूसरा कैरेक्टर बना रहे होंगे शायद. So there could be multiple scenarios, but if you want, आप थोड़ा सा मतलब you can put your question again थोड़ा डिटेल में, we'll come back to it. FT cooldown कितना है?
Yeah, but I don't think really see Maxter that these things should matter. I mean, अगर आप AFK हो 5 मिनट भी तो I think you should get kicked. See, there'll be people if let's say there will be people in the queue and you're AFK in the server, then you're already doing injustice to someone. ठीक है? तो 10 मिनट 15 मिनट फर्क नहीं पड़ता इन क्वेश्चन से आई फील टफ सर्वर मत रखना पता चले लॉक पिक करने के लिए रोना रह गया जब किसी अब ये मतलब बहुत ही वियर्ड आस्क है बट अगर आपको लगे कि आप लॉक पिक नहीं कर पा रहे हो तो देयर कैन बी अ वेरी सिविल वे टू लिव इन द सर्वर आल्सो आई गेस ठीक है और नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज योर कैरेक्टर्स फ्लॉ राइट अगर FPS नहीं आए तो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं कर सकते ठीक है आई थिंक आई कवर्ड इट 16:9 वर्क्स 4:3 डजंट वर्क फॉर श्योर और भी हैं रेजोल्यूशन आई डोंट नो व्हाट ऑल इज वाइट लिस्टेड राइट नाउ बट आप वो चेंज करोगे तो द सर्वर विल गिव यू नोटिफिकेशन अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा हम लोगों के लिए तो इट विल आस्क यू टू चेंज इन 30 seconds or something or else you will get kicked from the server. मेरी बैक स्टोरी पीडी की है लेकिन फर्स्ट टाइम हैप्पी विद सिविलियन इज इट ओके यस इज देयर एनीथिंग कॉल्ड कॉप प्रायो आई थिंक जिमी आई आंसर्ड योर क्वेश्चन क्या हेली से कट के बंदा मर गया हूँ बाय मिस्टेक क्या हेली से कट के बंदे मर गए सो वो इट्स नॉट से ओके लेट्स नॉट गो टू बैन बट वो डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन है क्या एंड किस पर्पस में किया गया है बाय आई मीन ओके सो बाय मिस्टेक यू हैव रिटन देन ओके आई डोंट नो हाउ टू इवन आंसर दैट क्वेश्चन any department priors are there guys but again जैसा फ्लैश ने बोला you need to definitely show your dedication उस कैरेक्टर के towards for us to keep वो बहुत constantly review होगा that one thing will be very under a very close monitoring if the PC is slow then what to do 5 minutes I felt was decent इससे ज़्यादा रखने का मतलब है कि then it will not just be called reconnect prio being very honest with you guys 5 minutes से ज़्यादा reconnect prio it will not fall in reconnect it will just become a priority at some point in time इनमें से क्रिम एक साथ कर सकते हैं and also if we get selected for EMS then characters बाय करना पड़ेगा So I think this is a question that someone had. Okay, thank you for reminding me about character slots. So character slot definitely you have to plan your characters. You get one free slot from the server. आप एक character बनाएं, एक character खेलें. This is done with the intention to only have people who have made up their mind and are very dedicated to invest time on two characters. The whole point of the second slot or multiple slots being paid is this. We don't want कि आप disposable characters बनाएं which is like in between 5-6 दिन के लिए अगर आपके मेन कैरेक्टर पे आरपी नहीं है तो फिल करने के लिए फिलर की तरह कुछ भी विथ लेस प्रोग्रेशन यू डू बैड आरपी ठीक है द पर्पस ऑफ डूइंग वन कैरेक्टर इज कि आई नो हुएवर इट सीम्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट राइट नाउ बट हुएवर वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि वो टाइम डेडिकेट करेगा अपने सेकेंड कैरेक्टर के प्रोग्रेशन पे उतना ही जितना वो अपने फर्स्ट कैरेक्टर पे कर रहा है I think then only it will make sense to buy. I won't say the reason I have not kept even 2 slots this time, or we all I think decided, it's not me, we all came to this conclusion is we felt कि we want to make sure
We don't want to see those disposable character scenarios जहाँ पर people would just make a character for a few days and it'll because वो character definitely fast progression करेगा because आप उस पर उतना time invest नहीं करोगे. ठीक है? Yeah. What tier of prio departments get? It's a custom tier. We will update you. I think your department head will update you a little in details about it. Abhi, I think we are still in little early stages about department prio, but I think it should be decent enough. Also department prio or cop prio, AMS, whatever prio जो भी है, वो that will be applicable to your only particular character, either it's PD, AMS, etc. Don't expect the perks given to the department prio to be gelled along with your second character too. So ये clear करना था बात. It will be only for your cop character only. अगर आप कॉप में से आ रहे हैं और आपका एक सेकंड कैरेक्टर भी है तो उस पर वो प्राय एप्लीकेबल नहीं होंगे. Okay. Yeah. Thank you, Oliver. Thank you. जी. Can we get limitation on abuses? So guys, with abuses, I think मैंने इसके first half वाली meeting में cover कर लिया था. Streamer friendly है. It's something you're not comfortable. You have to just use local OC and ask the person to stop doing it. आपको immediately stop करना है. और also मैंने वो भी समझाया था कि you need to know कि know your audience, know your crowd. जिन लोगों के अराउंड आप आरपी कर रहे हैं उस टाइम, अगर किसी को नहीं पसंद है या नहीं करते हैं, आप डू नॉट स्टार्ट विद दैट. फर्स्ट यू नीड टू असेस. जैसे रियल लाइफ में भी आप किसी से मिलते हैं, हाय हेलो, देन धीरे धीरे इफ यू सी कि ओके ही इज कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, देन यू गो टू दैट स्टेज. We are fine. I mean, obviously we are not kids here. We know कि if you in a group is comfortable using that language अपने आपस में, we should not have a problem with it. But अगर किसी को problem है but आप still उसके मना करने पे कर रहे हो, we will have a lot of problems with you then. Okay, please do not do that. कि मैकेनिक में प्राय होती है नहीं. So I think we've covered most. We've heard in the last one that snitching is not allowed. But Yeah, that's not allowed. It's as yeah. simple as that. Yeah. Let's keep it simple. उसमें कुछ है ही नहीं कुछ बात करने वाला. Yeah. स्निचिंग के नाम पे बहुत रगड़े हो चुके. So let's keep it away. So you're saying news reporter, private detective, investigator. So we would, if there would be a scenario जहाँ पे आपको लगता है कि you have to snitch but you have proper RP, we would wanna see just open a ticket, talk to us, okay? We wanna make sure कि आपके progression से बहुत सारे लोगों की RP नहीं खराब हो रही हो. So we wanna make sure कि that is being taken care of. Okay. Yeah. Forced RP is not allowed. Yeah, not at all. Any person feels that they're being forced for a certain RP, just use local OC. Okay. The audience of VLT RP, we know there are a lot of rules and about do's and don'ts. Most of the players there were so उन्होंने हम लोगों को हमने entertain किया. I want to request new people like me who got a chance to be here, try the best. So I think it's simpler. जो मैं बोलूँगा, the moment you get into the server, everyone is same and I feel कि उतने ही chances हैं रूल टूटने के जितने आपके हो सकते हैं, शायद मेरे से भी टूट सकते हैं. You just have to be super cautious. Just make sure कि you read the rules. But I mean, it's all about
enjoying the character, and I think it should be fine and should look nice. At least 2 characters should be free. I think already I have given a justification about it. We all together here feel कि कि एक कैरेक्टर को प्रोग्रेस करने में इट टेक्स मल्टीपल नॉट वीक्स बट मंथ्स properly progress करने में I do not see a reason why people will have you know will need On top of immediately. that, people get inspired and talk about so many international servers जहाँ पे सिर्फ घुसने का $1,000 $500 लग जाता है, कैरेक्टर स्लॉट्स का $1,000 फीस है. So when we talk and preach a lot of international things and server, and we are bringing it in our own country and trying to make a change and call it as a premium server, I think we should respect that thing, isn't it? We've called it a lot of times. We are a premium whitelisted server. So let that be, and we have a lot of servers जहाँ पे बहुत सारे character free मिलते हैं. So you can always try those servers and अपना role play वहाँ पे दिखा के you can always attract your build your audience. I mean, like that could be as simple as that, isn't it? Right, bhai? I mean, I'm just saying कि guys, we are different because we are trying few things different. It's just if you want us to fall under the same pattern which has been happening, तो हम लोग कोई change ला नहीं पाएंगे. So that is what it is. Okay. A person has engaged with civilian RP, so does he need to fill any form for mechanic? नहीं. It'll see. So whenever mechanic RP start, जो server में जब भी start होगी, आपको किसी ना किसी सर्वर में देयर मल्टीपल वेज जिसके अगर आपको न्यूज़ मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी तो आप जाके वहाँ पे अपनी आरपी इनिशिएट कर सकते हैं. अगर डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल. अगर मैं ओनर हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लोगों से फॉर्म भरवाऊँ, मैं इंटरव्यू लूँ डायरेक्टली, मैं लोगों से मिलूँ, दैट इज़ मी. देयर कुड बी सम अदर पर्सन, जो कि रियल लाइफ में भी होता है कि सम पीपल आर मोर फॉर्मल प्रोसेस ओरिएंटेड, कुछ लोग थोड़े कैजुअल अप्रोच होता है टुवर्ड्स फ्यू थिंग्स. तो आई मीन इट्स सिंपल. आप ओनर टू ओनर डिपेंड करेगा. आई डोंट नो हु बिकम्स ओनर, जो बनेगा उसके हिसाब से. आई थिंक someone needs to understand that we are not IRL doctors with limited knowledge. Haan guys, honestly, do not criticize doctors, trust me. Making fun or probably not respecting EMS RP, I personally will get very hurt and will probably not have a good conversation. ठीक है, they're trying. ठीक है, they're trying to give you a role play. I know कभी कभी कुछ गलत बोल सकते हैं, and we just have to have that थोड़ा सा leniency उनके लिए. हाँ, मतलब in this being said, the other way around, if we talk about doctors को लोग जो आके थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं उन चीजों को लेके, ये जो गैंग्स और क्रिम का हमने कॉप्स का अलग अलग किया है, अभी नेक्स्ट टाइम से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि गैंग्स कृपया करके पीडी को उनका काम और एसओपीज ना पढ़ाए, सिंस आप लोगों को भी एसओपीज इन एनी फॉर्म और अदर वे राउंड पता लग जाते हैं. सो प्लीज गैंग्स को वो ना पढ़ाए, पीडी को ना पढ़ाए, बिकॉज पीडी इज ऑलरेडी डूइंग द जॉब, एंड द सेम गोज विद पीडी कि वो गैंग्स को उनके रूल्स और उनके चीजों के बारे में, हुड एरिया एंड थिंग्स के बारे में जितनी आरपी नॉलेज है वहीं तक रखे. बस अब पुराने सर्वर्स की नॉलेज यहाँ पे लाके थोड़ा सा वो मिक्सिंग हो जाएगा, तो उसको थोड़ा दूरी रखते हैं. मैं वही कह रहा हूँ गाइस, इट्स ऑल लाइक कि जैसे आपको पता है कि आई मीन कि लीजन स्क्वायर कहाँ है या एमआरपीडी कहाँ है, एंड आई नो कि इट माइट सीम कि थोड़ी ₹2 एक्टिंग है फॉर डे वन, बट वो करना पड़ता है. ठीक है, फॉर योर इनिशियल प्रोग्रेशन यू नीड टू just switch off a lot of things that you know about GTA and just try to live your character. ठीक है. I don't know much, but does food get 5? Yeah, food and everything else will have a lot of everything has DK. And there are a lot of things to be done from civilian point of view.
आई थिंक इस बार कॉप क्रिम से ज्यादा आरपी सिविलियन के पास है, अगर करना चाहेंगे ठीक से. We've added lot of MLOs too and lot of features too, जिससे civilians को बहुत RP मिलेगी. So don't find out excuses to go into the crim side. We can always, like Heba said earlier, कि we can always promote civilian RP and उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं. So उस mindset में मत जाना कि जाएंगे गैंग करेंगे वॉर करेंगे तो ही हमारे पास वॉचिंग और ये सब आएगा. If you are truly an RP player, आप अगर अच्छे से सिविलियन आरपी करके कुछ भी करते हैं आउट ऑफ द ब्लू. वी हैव अ स्टूडियो 2 जो हमने अपने लास्ट स्ट्रीम में शोकेस किए थे. देयर कैन बी मल्टीपल इवेंट्स डन देयर एंड लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन दैट, लॉट ऑफ सिविलियन जॉब्स टू. सो या, उसमें आप लोग काम कर सकते हैं उस तरीके का. Yep. ठीक है गाइज, लास्ट फ्यू एंड आई थिंक 1-2 मिनट बाद बंद कर दियो ऋषित पीटीएस. ठीक है, एनीवन ऋषित शैम्पू एनीवन. आई थिंक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस बिकॉज आई थिंक अब रिपीट हो रहा है. Navya, I think your question is from last year's servers are ending, उनका RP gangs पे ज़्यादा फोकस होता है. Can we see something different this time? हम लोगों की तरफ से we have made sure. ठीक है, we have definitely made sure. That is, I mean, I know with introducing a lot of rules, it's a drag. वो अच्छा नहीं लगता कि हम बहुत rules है, so much to remember and all those things. But वो सब इसी माइंडसेट के साथ किया जा रहा है कि वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू. ठीक है. कैन सिटी हॉल प्रोवाइड अ मॉर्गेज लाइसेंस फॉर बिजनेस इन दिस सिटी टू गिव लीगली लोन इज लीगल इन रोल प्ले? आई मीन प्रबल, हु स्टॉपिंग यू? आपको कौन रोक रहा है जाके आरपी इनिशिएट करने से? नो वन इज स्टॉपिंग यू, राइट? तो अगर इफ यू हैव दिस आइडिया टू इनिशिएट द रोल प्ले, अगर हम लोगों को लगेगा कि आपका प्रोग्रेशन अच्छा है, तो I don't see how that cannot be done. ठीक है. I've never done PDRP before, but I'm all up for learning. Should I be worried about my interview? नहीं. I think the interviewers are already mindful of this situation कि काफ़ी सारे लोग हैं वो learning के लिए आ रहे हैं. And I hope you have a good experience while interviewing. Can player have two characters, one with PD, one with AMS, basically two government characters? I do not see a problem with that, honestly, Felix. Launch timing क्या है? Launch timing बता दिया मैं, 7 to 8. Is there an auto shop job? Just RP it out. Compulsory to continue the backstory that has been filled in the form. हाँ, obviously. जो आपने बैक स्टोरी फिल किया है, जो हमने पढ़ा है, हमने उस बेसिस पे आपको वाइट लिस्ट किया है. अगर अब वो आप नहीं फॉलो करते हो या अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यू ओपन ए टिकट. It's basically, I think, backstory is usually a very crucial point for us to whitelist someone. So, yeah. How many gangs? I think you guys are just being way ahead of yourself. Just stop thinking about gangs. अगर आप सोच रहे हो आप ऑलरेडी अच्छी आरपी से स्टार्ट नहीं करने वाले हो, ट्रस्ट मी, टेक माई वर्ड फॉर इट. ठीक है, अभी इट्स द स्टार्ट. There's a lot of things to explore. अगर आई थिंक यू जस्ट थिंक अबाउट योर इंडिविजुअलिटी, आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर का क्या ट्रेट्स है, उसकी क्या स्टोरी जाती है. जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट गैंग्स राइट नाउ. ठीक है, आई लिटरली वुड से कि मैं नहीं चाहता हूँ कोई 2-3 हफ्ते तक सोचे भी, एक महीना भी पकड़ के चलो. लेट्स नॉट इवन थिंक अबाउट इट फॉर अ मंथ. ठीक है. Also, I think Goli bhai asked a very interesting question about from Logic. So yeah, Logic, you can respond to us in off-topic chat. But I think this is all from me. I need some water. पर अगर कोई भी और like we have the whole crew here. अगर if I missed anything, guys, please take it away. कोई बोल नहीं रहा कुछ. Okay. So I think Goldie bhai covered everything. I would suggest the crew जो हमारे टीम में जो बैन वैन का काम ज्यादा देखते हैं, वो लोग थोड़ा सा रेफर कर दे कुछ चीजों को if they want to.
so that would be better. I mean, like, उन लोगों का end of the day काम आसान होगा. The less the tickets, the less the reports, and if they want to specially mention something like Rishit, Shampoo, Rusher, Flash, Cadbury, Yeah, Karthik. is I want to mention exploitation mat karo, because we would be rigorously going through the logs and proper progression करो. पता चला हर दूसरे दिन तुम एक कुछ स्पॉन कर रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं है, बट वी विल कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग. एंड अगर कुछ बग्स मिलते तो बी ऑनेस्ट, पुट फॉरवर्ड द proofs, attach the proofs in the bugs channel, ताकि our developing team can fix it at topmost priority. Yeah, मत करो कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन. अच्छा ही लगता है बैन देना, वो भी परमा बैन. That's guys, new start हो रहा है. I would highly recommend like progression पहले पॉइंट पे रखो कि मेन थिंग स्टोरी बिल्ड, प्रोग्रेशन, अच्छे से इंटरेक्शन. एंड ऑनेस्टली माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज टू रोल प्ले विद न्यू प्लेयर्स ज़्यादा. लाइक एवरी टाइम आई हैव डन इट कि इवन गैंग्स, अगर मैंने गैंग्स करी हैं फॉर एग्जांपल, तो मैंने मेजॉरिटी टाइम गैंग्स सेम बंदों के साथ नहीं करी है. सो दूसरे लोगों को भी आरपी मिलती है उससे, और उससे लोगों से इंटरेक्शन वगैरह भी बढ़ता है. तो प्रोग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम लोग प्रोग्रेस करो, जिन लोगों के साथ तुम्हारी आरपी बिल्ड हो रही है उन लोग के साथ स्टोरी बिल्डिंग करो, उन लोग के साथ एक्सप्लोर करो. काफ़ी नए लोग मिलेंगे तुम लोगों को साथ में, और उसके साथ भी आगे चल के बहुत अच्छी आरपी हो सकती है उसमें. सो प्रोग्रेशन की पॉइंट. बैंड्स, अगर कोई फेल आरपी वगैरह कर रहा है, ट्राई टू एजुकेट देम. लाइक जितना हो सके. ऑब्वियसली इन आरपी ओ सी मत चले जाना कि हाँ, बट लाइक थोड़ा बहुत उनको अगर तुम जानते हो या तुम पता है तो एटलीस्ट ट्राई टू एजुकेट देम. अगर फिर भी एक ऐसे एक्सटेंट पे हो रही है तो यस, ओपन ना टिकट, तो हम लोग ऑब्वियसली देखेंगे वो. बट ऐसा दिमाग में लेके नहीं चलना कि भाई ये बंदा बैन ही करवाना है या ये बंदा नहीं होना चाहिए. तो ऐसे लेके मत चलना. नए आरपी प्लेयर्स भी आ रहे हैं काफ़ी, तो लेट्स ट्राई कि वो लोग भी आगे चल के अच्छे से आरपी करें. आगे चल के क्या पता वो लोग भी बहुत अच्छी आरपी दे सर्वर को. एंड सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोच के मत करना आरपी. मेनली ऐसा सोच के करो कि जिससे ओवरऑल सब सर्वर को भी, पूरे सर्वर को भी आरपी मिला. सो वैसे देखो कि सबको आरपी भी तुम बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के पीछे जाके या मैं बार बार एक ही चीज़ फॉलो कर करके आरपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या अपना करने की कोशिश कर रहा हूँ. ट्राई टू डू समथिंग जिससे तुम्हारी तरफ भी लोग आने की ट्राई करें, तुम्हें तुम्हारे साथ आरपी करना भी पसंद करें, या तुम ऐसा आरपी स्टोरी लाइन दो लोगों को कि उससे आगे चल के लोगों को भी आरपी मिले एंड सर्वर को भी आरपी मिले. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोग्रेशन मेन थिंग वो करना. और गैंग वगैरह का तो अभी गाइज मत सोचो, अभी तो टाइम है काफ़ी. गैंग में तो अब गैंग क्वेश्चंस भी मत ही पूछो, क्योंकि गैंग क्वेश्चंस भी बिफोर गैंग अनाउंसमेंट्स वगैरह होंगी तो कोई एक मीटिंग रख लेंगे, वो टाइम पे गैंग क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे. अभी ये मत सोचो कि हम लोग 10 बंदे 15 बंदे बैठ के आए हैं कि आगे चल के यही करेंगे. सो इट इज़ टू अर्ली स्टेज वो टाइम पे अभी ये चीज़ के लिए. तो अभी जितना हो सके एंजॉय करो, और अच्छे से एक कम्युनिटी बिल्ड करी जो है उसको, और लाइक लेट्स मूव इट फॉरवर्ड और एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं. That is all from For my side. Crims, yep, thank you, Rishar. For Crims, guys, I would like to add one thing. कि एक चीज़ ना बहुत ट्रेंड में हो जाती है कई बार, हम एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं. Let's say being a Crim, I'm doing robberies in the same way for a long time. एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, नो क्रिएटिविटी, गाड़ी ला रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, दैट्स इट. तो इट यूज टू हैपन बिफोर कि यार लोग सोचते थे, प्लान आउट करते थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, विल टेक दीज काइंड ऑफ वेज, ये कार लेके जाएंगे. अभी नए नए प्लेयर आ रहे हैं, नया प्लेयर बेस बन रहा है, तो मे बी दे हैव मोर क्रिएटिविटी, जो लोग भी नई आरपी स्टार्ट करेंगे. तो ट्राई टू डू आरपी विद देम, प्लान आउट विद देम, एंड
try to come up with some innovative things other than just एक गाड़ी लेके गए, उससे escape नहीं हो रहा, backup आ गया, उससे भी escape नहीं हो रहा, तीसरी बुला ली, वो backup आ गया. So do something कि आप लोग को भी मजा आए, काउंटर करने वाले बंदों को भी ज्यादा मजा आए. तो वही चीज है, थोड़ा सा इनोवेटिव और क्रिएटिविटी. I would like to answer the question asked by PP. Ki take sometimes like cops taking better lines than the racers. So in this, PD has a department named SCU, which handles the enforcement unit. So technically they are trained, and I guess you have done cop RP from like more than 2 years, so you should be knowing this thing. And on this, I would like to add Rishit के, as Rishit stated कि cops भी lines ले लेते हैं, cops उन लोग से पहले jump ले लेते हैं. ये जो होता है ना, कई बार मैंने ये चीज नोटिस करी है कि आप एक जंप के लिए जा रहे हो, कॉप आपसे पहले ले लेता है. ठीक है, ये आप ही लोग का सिखाया हुआ है उनको. आप लोग इस पैटर्न को कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, वो लोग उस चीज से सीखते हैं, एंड देन दे डू द सेम. सो दैट्स व्हाट द थिंग इज. अब वही रेसिंग में भी अप्लाई होता है, वही रूट बार बार लोग जाते हैं, फिर लोग सोचते हैं कि कॉप्स भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं. व्हाई आर दे? और जिमी जैसा कॉप तो वीडियो बना के डालता है लाइंस की, ट्रिक्स की, टिप्स एंड ट्रिक्स की, मतलब क्या बताएं, समझ में नहीं आता मुझे. टूटा. Anyways, guys, let's have fun. Yeah. Jokes apart, मतलब it's gonna be a very immersive experience. आप लोग को बहुत मजा आने वाला है. The way things have been put together. So try to make out the best out of it. And जाते please would like आप लोग, if you could all just appreciate the entire dev team, Light by Lexpy and the crew for the immense hard work they've put in the last 20 days, particularly. Thank you everyone for joining, and see you on second inside the server. Guys. तो गाइस मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है. देख लेते कुछ और होता तो. बंदे तो जा रहे हैं, देखते रहो. All right, then we'll be wrapping up the meeting. Yeah. Bye. चलो गाइस, उनका तो हो गया. क्या चल रहा है अपनी? चलो अपनी भी लाइव स्ट्रीम ही एंड करते हैं. मेरे को भी कहीं बाहर जाना है, तो स्ट्रीम ही एंड करते हैं गाइस. ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रीम मिलता है. टिल देन टेक केयर, गुड बाय. Thank you.